तांकर समस्ते बहुत किसी जानी तथापि मुझे कहबी इज ए वेरी गुड एकेडमिशियन तांकर पब्लिकेशंस तार गोटे गोटे पब्लिकेशन बोध अराउंड 300 साइटेशंस रही से पीएचडी डिलीट कर सारी से होती उत्कल विश्वविद्यालय गोल्ड मेडालिस्ट तापर किसी समस्या रही थे आसाम रे सिलचर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम रे भी मैनेजमेंट स्टेट मैनेजमेंट ये रही थे तापर संबलपुर विश्वविद्यालय से जॉइन कले प्रोफेसर एबे रिटायर कर पूर्व से मझे थे कुलपति आमर ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय ओडिशार से समय मुझे सहित कथा से बोधे प्रथम कर आरंभ करते जेल रे थिबा जो मान रही जेल आदिवासी मान भी से एकेडमिक्स केमती ग्रो कर भी से चेष्टा करते भी क्लास नाक भी ये व्यवस्था करते बहुत बहुत धन्यवाद से जी समस्या रही बहुत किसी करके देखी आम आशा करूँ भविष्य से आहरी एकेडमिक्स को ग्रो करने को चेष्टा करी ओडिशा रे तांकर आज टॉपिक हूँ सर्कुलर इकोनॉमिक्स मत बहुत डिफिकल्ट है अनुवाद करके ओडिया रे मोटे वृत्ति अर्थनीति बोली भावुली कि यहाँ हूँ चक्रीय अर्थनीति बोली कहते तेणुक सार से भाषण आम जापर प्रकृति चक्रीय अर्थनीति कौन सार आ गोटे सपोर्टर भी सहधर्मिणी सी मत जड़े बड़ गवेषिका एवं भल टीचर सोनालिका पट्टनायक बायोटेक्नोलॉजी से जन ये अच्छा गोटे पुओ भी अच्छी पुओ भी भल स्टूडेंट मो जानवे बर्तमान मु सार को अनुरोध करी सार ये कहे ये टॉपिकटा मुझे जानी जी भी शुणी से टॉपिक मत जहाँ कही एटा जो गोटे माने सर्कुलर इकोनॉमिक्स न कहीकि मुझे सर्कुलर मटेरियल ऊपर बेसी हम सर्कुलर इंडस्ट्रियल ये करी सेमती माने जोटा आम कहूँ मेक टेक एंड डिस्पोज ताकू छाड़ी बर्तमान से कहते मेक टेक रियूज डिस्पोज न कर रियूज करके पुणी मेक को पड़े आसो अगेन रिमेक मेक टेक रिमेक रे से बेसिक रही तथापि विषय डिटेल्स जाना आम जी ज्ञान ना से हिसाब मुझे कही जी डिटेल्स जाना एवं सार को अनुरोध करी आमको एटलिस्ट 8 मिनिट खंडे 8-10 मिनट खंडे टाइम देवी जमी डिस्कसन लास्ट आड़ को आप 40-45 मिनिट्स आप नहीं पारते सार को अनुरोध कर आरंभ करूँ आरंभ करूँ अनम्यूट करूँ हाँ अनम्यूट करूँ आप म्यूट रे अच्छा आप पावर पॉइंट देखेबी कि हाँ सर हाँ बस ताले देखि पारत शेयर कर सर्वप्रथम मु समस्त को नमस्कार मो तरफ विशेष करी विजय सर जो कहले सर एम आई ऑडिबल सर शुभुची आज्ञा सो आउ थे समस्त को स्वागत जनाऊँगी एवं विशेष करी मो कहि कि मो आई एम हाईली इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ यू मु जिते संबलपुर यूनिवर्सिटी रे जॉइन कली से जो सीनियर प्रोफेसर मोठू जो माने सीनियर थे जो मान मु बहुत स्नेह श्रद्धा पाई से भितर सार जड़े विजय मिश्र सर जड़े से उपस्थित अच्छा से
एवं मोर जदि ऑनेस्टली कहिबी ताले मु तो मिडिल ग्रुप रे जॉइन करथिली मिड कैरियर रे तो मु संबलपुरी से थिला बेल को सीनियर माने मते एते आदर जतन करिसंती मते एते आशीर्वाद करिसंती से पई मु समस्त पाखरे ऋणी सार प्रेजेंस रे आज मोर इंडेप्टेडनेस एक्सप्रेस करूची बाकी यूनिवर्सिटी बाबद रे मु किछ कहबिनी सर कम समय रे बहुत कथा कहि गले मु सेबळी किछि नो मु गोटे साधारण लोक एवं मु सबले चेष्टा करिछि मोर ऑनेस्टी मेंटेन करिया पई आपण माने निश्चित जानिबे जे आजिकल जहाँ चली बोधे ऑनेस्ट रहिबा भी सब बेले बहुत चैलेंजिंग थाए आप बुझी पारुथिबे बट से बाहरे मो आपण मान समस्त पाखरे ऋणी जे आज गोटे मते सुजोग मिली मोर किछि ओपिनियन रखिया पई समस्त सामने रे मु आशा करूची जो 40-45 मिनट रो प्रेजेंटेशन रहिबो तापरे भी आमे 5-10 मिनट सार जमते कहले आमे डिस्कस करिबा मोर उद्देश्य तो बिल्कुल नुह कि मु पावर पॉइंट रियली प्रेजेंट करिबी किंतु एथरे किछि इंफॉर्मेशन अछि मु आशा करूची समस्त को किछि ना किछि इनपुट मिलिबो एई टॉपिक रो इंपोर्टेंस टाको विशेष करी बुझिबा पई एप्रिशिएट करिबा पई वर्तमान जदियो मु कहिबी ओडिया रे चेष्टा करिबी बट इंग्लिश रे किछि वर्ड तो डेफिनेटली आसीबो प्रेजेंटेशन इंग्लिश रे अछि मात्र आमे डिस्कशन कला बेल को आमे हम निज लैंग्वेज रे करिबा एज फार एज पॉसिबल मु प्लान करिछि किछि स्पेसिफिक पॉइंट इथरे टच करिबा पई जेमति कि सर्कुलर इकोनॉमी कहले कोन एवं लीनियर जहाँ को हमें स्ट्रेट लाइन बोली कहूँ स्ट्रेट लाइन कौन अच्छी लिनियर इकोनॉमी कौन आबे कहीं सर्कुलर इकोनॉमी उपरे आमे फोकस करूछु तापरे सर्कुलर इकोनॉमी किछि मॉडल अछि तापरे रिलेवेंस भी अछि व्हाई इट इज इंपोर्टेंट टुडे एवं सी बेसिस रे हमें किछि पॉइंट्स आगो को नबा एवं मो এই पर्टिकुलर टॉपिक रो इंपोर्टेंस को एप्रिशिएट करिया पई मु किछि बैकग्राउंड क्रिएट करबी सेति पई किछि स्लाइड अछि बट एतिकी प्रथम रो मु कहि रखिबी कि एटा एई पर्टिकुलर टॉपिक एमिति गोटे हॉट टॉपिक करंट एट प्रेजेंट केवल इंडिया रे नहे वर्ल्ड वाइड एवं एई टॉपिक ता सब डिसिप्लिन इट कट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन एक्चुअली राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग to including health services I mean medical for that purpose ता बाहर general studies आमे जोटा करूछु science humanities including literature भी ता भीतर अछि मु चेष्टा करबी सब को एक्सप्लेन करबा पई एवं हो तो ए समस्त पॉइंट आमे टाइम न होई पारे टच करिया पई बट मु नेसेसरली कि मु इंपोज करबी नै कि सारे सब जाक स्लाइड आमे एक्चुअली देखिबा तेबे कॉन्सेप्चुअली जदि मो मीनिंग आड़ को आसीबी सर्कुलर इकोनॉमी रो विशेष तार उद्देश्य होची कि टू मिनिमाइज वेस्ट एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सर इंट्रोडक्शन देला बेले टिके कहितले ता बारे रीजनरेटिंग द नेचर एंड all this is possible through smarter product design longer use of the product and recycling and reusing the materials इटा को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रे जेमति कहली मो वर्ल्ड वाइड यार इंपोर्टेंस एबे बहुत फीलिंग एवरीवन इज फीलिंग दैट मो डेफिनेटली जो स्लाइड किछि मो व्हेन आई प्रोग्रेस थ्रू आपण माने देखिबे केते यार इंपोर्टेंस अछि सेही सब रे बेसिकली हमें कहबा कि हाउ टू मिनिमाइज द वेस्ट एवं तारो इंपोर्टेंस कोन भी हमें देखिबा ई स्लाइड भी सिमिलर टू दैट इकोनॉमिक हमें जेतले आणुचु इकोनॉमिक फेनोमेना टू इंटीग्रेट द हमें जो वेस्टेज कथा कहले मिनिमाइज वेस्ट मींस वेस्ट ऑफ बेसिकली मटेरियल्स तब हरे वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस if exactly not materials it is also resources and it is sikota coach when we go for the economic value ताले सितरे जते इकोनॉमिक को हम इकोनॉमिक्स को आनी के इंटीग्रेट करूछु ताले कोच कि इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एम्स टू एलिमिनेट वेस्ट
and promote sustainability through reuse and resource of reuse and resource efficiency. एवं आउ टिके आगु को जिबा it's a systematic approach to economic development जोटा कि मो टाइटल रखछि sustainable development, but एठी कहूछि कि it's a systematic approach to economic development designed to benefit business, society and the environment, in contrast to the linear economy जोटा कि basically make गोटे straight line ने रहउतला. Take means taking resources from wherever it is available, and basically we हमें याको मीन करछु natural resources. Natural resources हमें समझते जानछु कि limited, जोटे कि natural resource यूज करिबा एवं ताको यूज करके गोटे प्रोडक्ट बनेबा, प्रोडक्ट यूज करके संगे संगे ताको हमें डिस्कार्ड करे दबा. एई मॉडल रे इकोनॉमिक केवल इंडिया रे नो वर्ल्ड वाइड चाली थिला. मोस्टली डेवलपिंग कंट्री थ्रू ही बेनिफिट पाई छंती. ड्रॉ फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस जोटा अवेलेबल अछि ताको यूज करिबा एवं तापरे से जो प्रोडक्ट मिलिला ताको यूज करबा, तापरे ताको रिसोर्स हमें विल थ्रू इट. ई मॉडल थिला. किंतु सर्कुलर इकोनॉमी कहउची is a restorative and regenerative by design, and it aims to decouple, to de-link growth from the consumption of finite resources or limited resources. जो मॉडल टा एक्चुअली एमिति दिखा जाउची linear economy जो take, make and dispose जोटा सेंटेंस रे लिखा जाइतिला, वर्तमान तक गोटे it is इटो को हमें कहउछु कि it should take a full circle, therefore we call it circular economy. Make, use, recycle, and of course recycle है सल्ला परे सिथरु जहा reusable आसिला ताको reuse करा जाउची, और जोटा waste है जाउची entirely ताको हमें waste तो कहबेनी, ताको जोटा का आउ फर्दर यूज हे परबन ताको डिस्कार्ड करा जाय. तारो आउ टिके जदी इलाबोरेट हमको देखिबा, रॉ मटेरियल्स हमें नेले, प्रोडक्ट डिजाइन करले, आमा भितरो निश्चित हमें समस्त जानि छ जे डिजाइन करिवारे प्रोडक्ट बी विथ लेस रिसोर्सेस केमिति प्रोडक्ट एफिशिएंट हे परिबो. मो अति रो स्टेज रे जदी कहिबी हमें जेमति वॉल्यूम क्वांटिटी वॉल्यूमनस प्रोडक्ट थिला, जेमति कि कन्वेंशनल जदी हमें वार रे देखिबा कन्वेंशनल एमिनेशंस, आर्म्स एंड एमिनेशंस थिला, तापरे एटम बम आसिला. एटम बम टर साइज केते मिनिएचर हला, मीन फ्रॉम मेगा प्रोडक्ट, बिगर प्रोडक्ट टू स्मॉलर प्रोडक्ट बट विथ मोर एफिशिएंसी. तार मो नेगेटिव साइड कथा कहबिनी. द कांसेप्ट ऑफ डिजाइन आउची केमति हमें धीरे धीरे ताको माने गोटे बेटर प्रोडक्ट डिजाइन करबा व्हिच विल बी रिसोर्स एफिशिएंट हबो. एबे गोटे एग्जांपल मु देबी, जेमति हमें जतबेले हमें गोटे फ्रिज किनुथुलु बा एसी किनुथुलु, सेतेबेले थिला कोन कि न्यू स्टार. At some stage there was no star, tapare asila 1 star, tapare 2 star, then 3 star, then 5 star. Some companies have now started talking of 7 star. Concept है कि केमती energy efficient हबो, तो सही concept रे design asila, tapare जो design हमें करूछु ताको से उनसे product produce हला, reuse हला, I mean use हला through retailing process, जो distribution अछि हमें use कले, consume कले, reuse, तापरे जतेबेले रियूज हला परे जोटा रियूज हेई परनी, तापरे तारा फाइनली कलेक्ट करि सारी कि ताको रिसाइकल करा गला. रिसाइकल हेई कि पुनी थरे रॉ मटेरियल हिसाब रे ताको यूज करा गला. आ जोठी रियूज आउ हेई पर नाही, रिसाइकल परे देखा गला ताको हमें डिस्कार्ड करूछु. एई कांसेप्ट रे जतोले हमें आसुछु, मु एठी जदी गोटे खाली पॉइंट नेबी कि लिनियर इकोनॉमी का हमें जोटा मॉडल एपर्यंत चली रही थिला, लास्ट अबाउट जतबेले हमें जतबेले कहबा आरंभ कले जो एनवायरमेंटल बाबद रे तो कंसर्न हेले हमें, तापरे धीरे धीरे ये कांसेप्ट आसिला. किंतु से पर्यंत हमें रैंडमली नेचुरल रिसोर्स यूज करूथिलु. तेणु अप्रोच थिला लिनियर इकोनॉमी स्ट्रेट जोटा थिला बोली कहा जाउची टेक, मेक एंड वेस्ट. एपटे आसिला सर्कुलर इकोनॉमी, रिड्यूस, reuse, recycle and recover the resources.
बाकी मो टाइम सेव करबी और नॉट सेतरे मो बेसी आगो को जिबिनी वर्तमान रिलेवेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो फर्स्ट इंपोर्टेंस तार रहउची तापरे प्रोटेक्शन ऑफ मदर अर्थ एंड आमे समस्ते जानिछु जे एबे कथा उठुची आमे केमती अर्थ को प्रोटेक्ट करिबा जोटा एंड टू मेक इट लिवेबल जोटी के आमे समस्ते रही परिबा एवं इथरे मोटे के एक्सटेंशन पार्ट नउची हमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अछि जोटा हमर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अनुसार जो एसडीजी अछि मोरलेस हम भितर समस्त अवेयर थिबा कि वर्तमान 17 सस्टेनेबल गोल्स जोटा 2020 रे यूनाइटेड यूएनडीपी जो प्रोपागेट करिथिला वर्ल्ड वाइड तापरे काम होउची एवं सितरे जो 17टा गोल अछि केतटा रिप्रोड्यूस एठी करिछि तापरे हम देखिबा कलेक्टिवली 17 गोल जदि हम अचीव करि परुछु ताहले कोआ जाउची कि द होल वर्ल्ड विल बी डेवलप्ड वर्ल्ड एबे हमें जानि छु जे किछि कंट्री डेवलप्ड अछंती किछि डेवलपिंग अछंती किछि अंडर डेवलप्ड अछि तो ई concept जेतोले आसुची sustainable development goals if we are able to implement it fully then the whole world is expected to be a developed world ei ambition nei ki ei goal अछि given this ame ei slide re jodi dekhiba the present global natural resource consumption takes place at 1.7 times faster than their replenishment हबा माने रीजनरेट करिवा जते स्पीड रे रीजनरेट होची तार 1.7 टाइम्स फास्टर यूज होची माने हमें वी आर एक्चुअली फॉलोइंग बिहाइंड तो मटेरियल यार अर्थ होची ऑब्वियसली मटेरियल धीरे धीरे सरी जिवो मुके जो डेटा एठी कोट करिछि सेउडा को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देचंती जोटा के हमें साइंटिफिक बोली मानिबा वर्ल्ड वाइड ताको एक्सेप्ट करूचंती जेमती वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WE मु लिखिछि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली rich countries use 6 times more resources generate 10 times the climate impacts than the low income countries हमें अनेक समय डिबेट डिस्कशन रे सुनी छे जते बेले जो वेस्टर्न कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज से माने डेवलप हैचंती बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस एंड जनरेटिंग मोर greenhouse creating more greenhouse effect जो कि ପାଇଁ कि जो ग्लोबल वार्मिंग कथा आसिला एंड जहा जहा बट इवन टेंपरेचर जो राइज इन टेंपरेचर जो होची ये सब जिंसो भितरे वेस्टर्न कंट्रीज एंड बेसिकली द डेवलप्ड नेशंस से माने ही रिस्पांसिबल किंतु जितले से माने आगो एडवांस हे जायछन तापर वर्तमान डेवलपिंग कंट्रीज को कहउछंती कि तमे माने किछि काम करो नाही नो प्रोडक्शन यू बाय द प्रोडक्ट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड मेनी मोर मु कहूनी इवन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि मु कोट करछि देखिबे 6 the rich countries use 6 times more resources than the generate 10 times more climate impacts than the low income countries so international लेटर वर्तमान रिकॉर्ड करा जाय छै एंड आउट जिंस एठी जम देखिबा टेकिंग 2020 as the base use of natural resources will have increased by 60% by 2060 बेलको 60% बॉडी जाइतबो यूज एंड हमें एबे देखु जे ओनली 7.2% of used materials are recycled back to the economy and further the last one if you see if the current trends were to continue we would need 3 planets by 2050 this is one of the 8 sentence ta hame samastong pa appealing haba katha can we really hame generate kari par 3टा planet banei pariba hame gote planet re ebe achu se bi taku save kari parnu ei rate re jodi materials consumption hela it is estimated that by 2050 that means after around 25 years down the now we will be needing 3 planets एवं एथरे मध्ये उटे साइंस अछि एई वर्ड रे जे 3 planets by what by going by the American standard of living रे जदि हमें जाउछु ताहले 3टा planet दरकार हबो
ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା standard, then it will be 5 planets. Rather, sorry, yeah, in fact we need 3 planets, but ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ average ନଉଛୁ, ଆଉ American standard ରେ ଗଲେ ଆମେ 5 planets ନବୁ. I'm sorry, I just missed it, I mean reverse କହିଦେଲି. So more planets will be needed if you go by American standard, but average ଯଦି ଆମେ ନବା ତାହେଲେ 3 planets. ନା ଆମେ 5ଟା planet ବନେଇ ପାରିବା, ନା 3ଟା planet ବନେଇ ପାରିବା. ଏଇଟା ହଉଛି issue. ଆଉ ତାର reason ହଉଛି ଯୋଉ natural resource ଯୋଉ consumption ହଉଛି ତାର effect ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି. ଏଠି ଗୋଟେ slide ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯୋଉ materials use has increased 3 times over last 50 years. 1970 ରୁ 2020 24-25 ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ materials କେତେ consumption ହଉଥିଲା. 1970 ଥିଲା about 30 billion tons of materials, ଆଉ ଏବେ 2025 ରେ 24, in fact 23-24 ର data ଅଛି, 106.6 billion tons. ଏବଂ materials କହିଲେ ସେଠି ଯେମିତି biomass ଅଛି, non metallic fossil fuels ଅଛି, metals ଅଛି, and some of by names ଅଛି, ଯେମିତି limestone ହେଲା, mica, sand, iron ore, copper, mercury, gold, ଏ ସବୁର description ଅଛି. ଏଇଭଳି use 3 times ହେଇଛି, ଏବଂ 1960 I mean 2060 ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ consumption କେତେ 60% ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିବ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ଲାନେଟ ଆଉ ନଥିବ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ଏଭରେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ଯିବା. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଆସୁଛି କି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ମଦର ଏର୍ଥ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ମୋର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି. 60% of the global greenhouse gas emission is caused by activities relating to production of goods and services. Definitely, therefore, ଯଦି more goods and services generate haba, production haba, more greenhouse gas effect ରହିବ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ earth will be obviously unlivable ହେଇଯିବ. It will not be conducive to live, particularly for human being like us. 80% of the biodiversity loss is caused by production of goods and services, impacting the environment and the human health through air and water pollution, soil degradation, and wildlife habitat loss. ये भी United Nations Development Program statistics and data. And increased resources use is leading to triple planetary crisis. ଏଇଟା ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, increased resource use is leading to triple planetary crisis, derailing the global climate, biodiversity and pollution targets, along with the economic prosperity and human well-being being ସବୁ ଏଥିରେ affected ହଉଛନ୍ତି. ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, जो ट्रिपल प्लैनेट क्राइसिस केमिति होची, क्लाइमेट चेंज जोटा कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स that in the long run will completely alter the ecosystem that supports life on the planet. पुणी असला एयर पोल्यूशन, एठी देखंतु 9/10, I mean in a sense 9 जन लोक out of every 10 people in the world breathe air that contains levels of pollutants that exceeds the WHO, the World Health Organization guidelines. से भितर आमे भी थिबा, तेणु आमे जो ब्रीथ करछु तार क्वालिटी ऑफ एयर वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स कहूची 9 people out of 10 are breathing polluted air. I mean no clean air to breathe. Then biodiversity loss, decline and disappearance of biological diversity, which includes animals, plants and ecosystems. ई क्राइसिस आसुची एथरे आहुरी डिटेल्स अछि, मु भाबुची हमें टाइम टिके सेव करबा सेठी, जदियो सबु जाको इंपोर्टेंट ता भितरे हमें देखले. Of course, well I'll stop here a bit. Jemti climate change ta basically driven by human activities, and almost everything we do releases emissions, but use of energy, industrial activities, transport,
building and agriculture are the main causes of release of greenhouse gases to the atmosphere. यार details mo auri debi. The consequences to ame jani saluni kemti jemti gote part hela increased intensity and severity of droughts, water scarcity, wildfire, rising sea levels, flooding, melting of polar ice, catastrophic storms, and declining biodiversity. Is saburo cause kouti achi dekhantu, mostly by industrial activities. Anything that we do, it releases carbon dioxide. It has greenhouse effect, but mostly it is by the industrial activities where production of goods and services take place by using the materials. And fivefold increase in the death due to the weather-related disaster. This is it out important thing. So worldwide जो record करा जायछि, fivefold increase, 5 times increase in the death due to weather-related disaster, and about 21.5 million people displaced due to climate change-related disasters. Air pollution simply caused by everything from traffic to factories to wildfire, volcanoes, molding, indoor household air pollution from cooking with polluting fuels and technology, polluting technologies. The largest cause of disease and premature death in the world, with more than 7 million people dying prematurely each year due to pollution. If I'm able to communicate, I'm sure to realize then cost biodiversity loss caused by everything from overfishing to habitat loss, deforestation to desertification due to climate change. Is issue asuchi, and waste generation जदि आमे देखिबा जो पूरा ग्लोब को केमति डिवाइड करा जायछि, मिडिल ईस्ट टू नॉर्थ अमेरिका रिलेटिवली लेस, ऑफ कोर्स तीनटा कलर यूज करा जायछि, एवं जोटा कि 2016 रो डेटा जो लाइट ब्लू रे अछि, देन येलो 2030 प्रोजेक्शन एंड 2050 बेल को केमति बढी थिबो, and से भितर होस्ट होची ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक. सिथरे ऑफ कोर्स आमे आसुछु एबे देखंतु एई सर्कल रे मत जो पाई चार्ट रे देखंतु कलर वाइज जदि जिबा 44% होची प्लास्टिक वेस्ट. ग्लोबल वेस्ट कंपोजिशन जदि आमे देखिबा सिथरे फूड ग्रेन अछि, ग्लास, मेटल्स, अदर पेपर एंड ऑल, प्लास्टिक सबटु बेसी अछि जोटा कि 44% अछि. एंड एक कथा कहबार कारण होची जे प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर करची, के यूज करची, हमको इंडियननेस हमें नाम को आई नीड नॉट एक्सप्लेन ऑन दिस. हमको रियलाइज करिया पड़िबो कि यार बैकग्राउंड रे कोन रहिची एवं काहे कि एबे सर्कुलर इकोनॉमी कथा आसुची. सेथिरो हमें आउट के प्रोजेक्शन माने आउट जदि मो स्लाइड नेबी अपन देखंदो केमती 2019 रो डेटा टू 2059-60 टिके आउट के रहिची. सो केमती परिस्थिति अछि वर्तमान केवल यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, आई मीन द प्लास्टिक वेस्ट, यूज ऑफ प्लास्टिक एंड द वेस्ट दैट वी आर थ्रोइंग, से केमती बढ़ीची ओनली 2019 to 60 एटा होची प्रोजेक्शन करंट रेट अनुसार. आमे आसीबा एसडीजी जो 17 गोल्स कथा कोतली से भितरो गोटे आसीला फर्स्ट आसी एसडीजी 1 नो पॉवर्टी बाय 2030 वर्ल्ड रे पॉवर्टी रहइबो नाही. दैट इज द प्रोजेक्शन एसडीजी 1. सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 कहूची कि नो पॉवर्टी बाय 2030 अबाउट 7% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन or over 600 million will still be struggling under extreme poverty. Well, आज का डेट रे आई मीन 2023-24 डेटाबेस से मो यार प्रेजेंटेशन दोची 2005-24-25 रा अपडेट हेइनी. एबे आसिला एसडीजी रो मो इनिशियली भी कहितली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जोटा कि
United Development, UNDP, United Nations Development Program, he taku fix in a way United Nations is fix karichi the ei 17 goal jodi ame achieve kari parle 2030 re world pura world develop he jaithibo, but ajiro figure कहउची जे it appears that it is difficult. Even 7% of the global population or 600 million will still be struggling under extreme poverty. And poverty कहले हमें quickly जदि देखिबा जो international standard कहउची कि $2.25 per day. Our Indian standard रे दीटा अछि rupees 1060 in the rural per month, 1060 per month if it is rural area, and 1286 per month if it is urban area. So per person income जदि 1000 टंका बा 1200 टंका रु कम होउची ताहले हमें ताकू कहबा below poverty. आउ एटा होउची वर्तमान रो current state. Global poverty is one of the most pressing problems the world is facing. And what happens, poverty rahile kon hochi, the poorest in the world are often undernourished, without access to basic services like electricity, safe drinking water, education, and poorer health. ये situation रोची जदि poverty रोची एवं एबे भी हमें poverty कथा देखिबा को अछि. Sustainable development 2, no poverty, and the next होची zero hunger. And what is the current status? Around 733 million people faced hunger in 2023. That is 1 out of 11 globally and 1 out of 5 in African countries. And 1/3 of the world food produce gets lost. One side hunger rahila, ei patta mu highlight karichi ethi. I mean, we need to appreciate ki kahi ki ei jo discussion mo bhabile important. About 1/3 of the world's food produce gets lost, or I mean end or gets wasted. Means इयाडे लोक भोकरे रहउचंदी खाइबा को पाइ नांती, सियाडे हमें food and food grain waste करूछु. Food waste contributes to about 24 to 26% of the carbon footprint globally. Obviously there एठी देखो तो केते importance ए particular slide रे अछि information. हमें न जानी की हो केते बेले जानी की भी हो हमें food हो तो waste करूछु, but collectively worldwide जेते food waste होछि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अछि तारा 24 to 26% केवल फूड वेस्ट जो द्वारा होछि. अदरवाइज टू से कि यदि हमें फूड वेस्ट बंद कर देबो हमरो संगे संग जो मदर अर्थ लिवेबल है जो एटलीस्ट जो रिस्क अछि इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 24 to 26%. आउर इंपोर्टेंट मेसेज होछि 3 kgs of food thrown to the bin produces 23 kgs of carbon dioxide. And आमे जदि खाइबा छाडिला बेलको खाइला बेलको जदि हमें प्लेट रे किछि भी छाडुछु अनेक समय रे होउची केतेबेले हमें देखिछु इवन बफे सिस्टम रे मध्य लोक एते फूड कलेक्ट करूछन्ती जे खाइ न पारे कि प्लेट को कोन रे पकई कि जाउछन. द मेनी एता तो गोटे रॉ एग्जांपल मु दोछि, बट इट इज अ फैक्ट, इट इज अ ट्रू, आई मीन इट इज ट्रू. तो ई सिचुएशन जतेले अछि वर्तमान कार्बन फुटप्रिंट मेटी आउट के बेनी एसडीजी 3 को आसेला. No, SDG, yeah, SDG 3, yes. Good health and well-being कथा को जाउची. UNICEF कोच रो 4 पॉइंट अछि. से भितरे strengthening primary health care system to reach every child, focus on maternal, newborn and child survival, prioritize child and adolescent health and well-being including mental health, support responses to reduce the impact on children and families of natural disasters, complex emergencies and demographic shifts. And practically कौन होची हमें जानी छु. एबे आसीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 भितरे मु दी तीनटा छाडी दोची. Sustainable development 7 कहूची affordable and clean energy. And here is what the energy scenario, world energy scenario. ए जो ग्राफ रो हमें देखिबा कि
एटा 1965 रु 1990 2019 भितर सिचुएशन कोन अछि ग्राफ रे देखिले आमे मैक्सिमम जो एनर्जी जो ड्रॉ करिछु just not we in India but worldwide oil ru asuchi energy basic followed by that coal tapare gas and au upar ko dekhibe jemte ki ote solar energy it is negligible wind energy hardly any hydropower teke achi other renewable resources ebe ame jetole kochu natural resources jetole use hochi and jo rate re use hochi we need 3 or 5 earth planet तो से जगह रे जतले ऑयल जतले हमें यूज करूछु कूल यूज करूछु एगुडा को सब नॉन रिन्यूएबल once used is used forever and therefore the depletion is taking place इठी हमको तेनो चिंता करबो को अछि कि हमें केमिति जब हम प्रोडक्शन जो डिजाइन कथा उठिला कि हमें केते कम यूज करि पाबु रिसोर्सेस एंड हमरो in fact the sustainable development kotha ko jauchi tar very essence ame again I feel ki ame samaste aware achu development today but not at the cost of the future generation that is the meaning of sustainable development development has to be sustained over the next generation so it is not ki ame aji achu jaha resources am pakre achi sabu ame consume kari ko khailu sari gala आमर नेक्स्ट जनरेशन आसला बेल को एमिति न हो गोटे सिचुएशन व्हाट इज कूल कहले से माने कोठी म्यूजियम जाय कि कूल खोजिबे कूलटा केमिति देखा जाय बोली जानिबे एबोली सिचुएशन नो आसो नो वेल एठी अछि ग्लोबल रिस्क जो अछि रिस्क लैंडस्केप अछि एक्सट्रीम वेदर एवं सेटा भी हमें एबे अवेयर अछु फुल्ली कि केमिति वर्ल्ड वाइड वेदर कंडीशन रही छी এই জায়গারে মো বিকজ টাইম ইজ एक्चुअली अप्रोचिंग মো এठी কহিবি টাস্ক ইন হ্যান্ড इंटरनेशनल लेवल रे मेकिंग द अर्थ लिवेबल और सेविंग द अर्थ केमिति हबो टू सेव द अर्थ एसडीजी बाय 2030 इज द गोल नेट जीरो बाय 2050 नेट जीरो इज अ कांसेप्ट एबे पेरिस रे से मीटिंग हेतला हमें अगेन समस्त अवेयर थिबु कि balancing the amount of greenhouse gases emitted and removed from the atmosphere by human activities. I mean it doesn't say कि हमें greenhouse gas effect बंद कर दबा किंतु जेति कि हमें generate करूचु impact करूचु सेति कि ताको compensate करिवा by removing और removal किमिता हमें कहूचु गोटे गछ काटले आ 20 टा आई थिंक अर्लियर रेशियो वाज 10 न्यू प्लांट्स टू बी प्लांटेड 10 टा नुवा गछ हमकु बढ़ाइबा को पड़िबो तो सिमिलर एक्टिविटीज कथा को जाउची तो नेट जीरो इफेक्ट इंडिया इज ए सिग्नेटरी अछि ए जो डिक्लेरेशन अछि नेट जीरो बाय 2050 सेति पय आपण माने भी अवेयर अछंती एबे जो सोलर पैनल कथा आसुची घरे घरे सोलर पैनल लगेया पय गवर्नमेंट भी किछि सब्सिडी दउची तार से भी यार गोटे बाय प्रोडक्ट जे केमति हमें नेट इलेक्ट्रिक बिल कंजम्पशन हमें केमति कम करबा हमें समझते जानिछु जो इलेक्ट्रिक जनरल इलेक्ट्रिक हमें जोटा बे यूज करूछु मोस्ट से एनर्जी आसुची फ्रॉम फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर हाइड्रो आगो थर्मल तापर हाइड्रो बहुत कम आसुची जोटा प्रोबेबली डोमेस्टिक यूज होथबो कि नै आई एम डाउट जोटा कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी कथा कहूछु तेनु जते बेला हमें थर्मल एनर्जी जदी माने इलेक्ट्रिक जदी कोइला जळै के हमें पाउछु तार अर्थ तो हमें मटेरियल्स यूज करूछु जोटा डीप लेवल सरी जीवो हमें ताको रिन्यू करि परिबु नाही या बाहरे इंडियन केस रे जदी हमें नबा नेशनल लेवल रे इंडिया रे हमें कहूछु इंडिया इज टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050 इन फैक्ट एबे रिसेंट जेतु इंडिया हैज बीन एबल टू मेंटेन जो हमें एबे कहूछु 7.6% to 8% जीडीपी ग्रोथ रेट रहिछि इथरे हमें माने खुशी होबा कथा डेफिनेटली देयर इज अ रीजन टू बी हैप्पी कि कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज I mean एबे इंडिया होची वर्ल्ड रे टॉप नंबर 1 ग्रोइंग इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड रिवाइज एस्टिमेशन कहूची बाय 2030 हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हे जाइथिबो मु जदी आई नो आई एम रियली टॉकिंग टू इंटेलेक्चुअल्स मोर पर्सनल ऑब्जर्वेशन अछि जेबे एबे जो ऑपरेशन सिंदूर हेतिला
ता भितरे केते डिजाइन अछि जोटा मु फील करूची इंडिया जते बेले ग्रो करूची एते फास्ट प्रोबेबली हमें जदी जेमति हमें कहूना नेबर जदी आगो को बढ़ी गला प्रोबेबली सम ऑफ अस विल बिकम एनवियस कि हम इंस्टीट्यूशन माने हमें काम करला बेल को जे टिके भलो करची अन्य माने ताको पुल डाउन करबा इंडिया जबे ग्रो करूची वर्ल्ड रे जो माने ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री अछंती से माने केबे भी चाहिबे नाही एंड सर्टेनली यूएस इज वन अमंग देम चाइना तो नेक्स्ट अछि ए माने केबे चाहिबे नाही कि इंडिया ग्रो करू सेति पई जहां जहां डिस्टरबेंस पॉसिबल सेटा से माने करिबे जेमिति कि आपण जानि थिबे बाइडेन समय पाकिस्तान कथा जदी मो डायरेक्ट नेबी गुड एग्जांपल जे तारो डिफेंस प्रोडक्शन आ एसब रे से माने किछि सहायता करू नथले तांगर किछि फंड बंद करी रखिथिले ट्रम्प असला बेल को कहला बंद जेमिति ऑपरेशन सिंदूर आरंभ हे जाईची तापरे सबु दिया चलीची तांको सब प्रकार सहायता तमने से जानिले इंडिया डिफेंस सेक्टर रे केते आगो को बढ़ीची ताको केमिति चेक करा छिबो सीधा लैंग्वेज रे कहले कि इंडिया पाई पाकिस्तान इंडिया जेमते हमर गोटे नै कि जोटा के हमें ओडिया रे कहबु सरदर्द बा हिंदी रे प्रोबेबली कहंती मुंडो बिंदा तो पाकिस्तान गोटे मुंडो बिंदा इंडिया पाई सेटा इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहउचंती विशेष करी डेवलप कंट्री चाहउचंती कि नहीं इंडिया को जदी प्रोग्रेस करि जाउची एते फास्ट ताको पछरु टाणिया पाई किछि गोटे व्यवस्था थिबा दरकार एंड देयरफॉर पाकिस्तान बोथ इन अमेरिका एंड पाकिस्तान अमेरिका और चाइना उभय तंको बर्तन सपोर्ट करचंती एटा इवन लेटेस्ट गोटे न्यूज आसुची आमे जेतबेले ओवरटेक करिवु बर्तन जापान को आमे समस्त जणिछु जापान गोटे कंट्री इंडिया सेतर बहुत फ्रेंडली एवं इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एड दे चलीथला एबे जापान रो गोटे पर्टिकुलर सेगमेंट लोक बाहरी चंती से माने कहउचंती इंडिया को नो सपोर्ट नो फर्दर सपोर्ट बहुत हे गला सो एटा बाउंड टू हैपन ए भली परिस्थिति होउची तेनो एबे जब इंडिया जेतले ग्रो करूची ई जो ऑब्स्टैकल्स आसीबो से जगह रे हमें ताहले केमिति निजको प्रिपेयर कर सो द बिग क्वेश्चन फॉर अस नेक्स्ट आसिला सर्कुलर इकोनॉमी केमिति कंट्रीब्यूट करूजबो से बाबद रे मु खाली रिक्वेस्ट करबी जदी श्रीनिवास दास बाबू अछंती बाकी जने मते खाली काइंडली जेतेले को मु बंद करिया पे मते जस्ट 5 मिनिट आगुरु कहबे मु पुनी स्क्वीज करबी एंड वी विल हैव टाइम फॉर डिस्कशन सर्कुलर इकोनॉमी रो या मु ए चितार अपॉर्चुनिटी टा को ही मु हाइलाइट करबी सर्कुलर 9:50 लानी आ 3 मिनिट खंडे कोंतु 3-4 मिनिट ताले राइट सर फाइन सो आई थिंक दैट्स फाइन सर एठी गोटे जिंसो आउ थरे जदी कहबा सर्कुलर इकोनॉमी एज अ मींस हमें जो ग्रो करूछु केमति सर्कुलर इकोनॉमी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर for mitigating the negative impact of production and consumption on the environment and the society. सी केस रे वर्तमान केमती को जाउछे and circular economy acts as a crucial tool in reversing the environmental crisis by promoting the reuse of materials and the efficient utilization of expired products to minimize the negative impact on the environment. इथरे मो एग्जांपल क्विकली देबी जेमति हमर जो बैटरी गुडा को हमें आगुरु बहुत आगुरु कोन होतला बैटरी जेते बेले हमें गोटे एक्सपायर कर जाउतला हमें ताको नो विदाउट नोइंग हमें ताको पकई दोतलु फुकड़ी दोतलु तापरे दुकान रे एमति छाडी दोतलु किंतु एबे कंपनी माने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रमोट करले गोटे कांसेप्ट कि नहीं सेटा को बायबैक हबो बा आपण नुवा बैटरी रो दाम जदी 20000 अछि से कहबे 2000 माइनस जो ओल्ड बैटरी दबा फल रे कारण सेटा को से माने डिसमेंटल करे कि किछि पार्ट्स ताको रीयूज करा जाउछि तो सही कांसेप्ट रे आसिला एंड एनकरेजिंग रिस्पांसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस and extending the service life of environmentally hazardous products, and this circular economy is going to create more jobs. Ethi kichi figures achi amo pakhare. The opportunity of circular economy is here estimated about 4.5 trillion US dollar USD by 2030. This is about 4.5% of the world GDP and is equal to a figure का जर्मन रो टोटल जीडीपी सतरे समान अर्थात 2020 बेल को सर्कुलर इकोनॉमी जो रीयूज सेविंग ऑफ मटेरियल्स रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स रिसाइकल ऑफ मटेरियल्स
reuse ये सब करिले हमरो एति कि गोटे कंट्री जर्मन गोटे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे सेही भली गोटे कंट्री रो टोटल जीडीपी जते सेति कि रो इकोनॉमी वैल्यू अछि सर्कुलर इकोनॉमी रे एंड मु आउ सेति के आगु जितनी एठी गोटे देटा एग्जांपल मु देबी जेमति हमें कहूछु मे बी 1 मिनिट सर मु एठी बंद करबी the agriculture product गोटे इंडियन सिनेरियो गोटे एग्जांपल खाली मु देबी 40% of the food produced gets lost in the Indian value chain value chain even before I mean food value chain even before it reaches the consumer 40% जिमटा में पेपर रे बाहर हमें जानू छु एग्रीकल्चर लॉस जो होची तापरे 10% gets wasted at the consumption stage so 50% waste हे जाउची हमें आउट स्लाइड रे देखले at least 1/3 of the world food produce is lost India रे जेतु हमें आउट के पछरे अछु तो about 50% is lost तेनो केमिति तारो रियूज हे परिबो सो जेमति प्रोडक्ट एज ए सर्विस मॉडल कथा को होची हमें आउट के डेफिनेटली डिस्कस करिबा क्वेश्चन आंसर बेलको मु जानि छी टॉपिक रो टिके बडो अछि किंतु मोर उद्देश्य थिला कि किछि स्पेसिफिक पॉइंट्स को रखिबी मु भाबुची सर मु एठी बंद करबी हमें क्वेश्चन जदि के आसीबो मु चेष्टा करबी आंसर क्वेश्चन अछि बोते बहुत जी सर बकंठो देखन तो क्वेश्चन किछि अछि चैट बॉक्स रे भी अछि एवं पचर के जो हाथ टिकितरे मजरे आया सर फर्स्ट क्वेश्चन अछि किशोर जेना करो हाउ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी जेमति हमें जदि पॉवर्टी कथा कहबा तो पॉवर्टी रे मु गोटे माने गोटे एग्जांपल इनइक्वालिटी मेरी वेरियस एस्पेक्ट्स अछि गोटे एस्पेक्ट हला जदि हमें इकोनॉमिक पॉवर्टी रेट कथा कहबा तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन हेची हमें मु देखैतिल जे इंडिया रे जेमति अछि 1000 रूरल एरिया रे अछि एंड 1262 और समथिंग फॉर अर्बन पर मंथ पर पर्सन जदि इनकम के करूथिबो आउ जदि याठू ऊपर को के करला ताले हमें कहबा कि एति के बा ताठू बिलु हेले पॉवर्टी हेला हमें तांको इक्वालिटी करिया पहले ऊपर को आनिया पहले तांकर इनकम बढ़िबा दरकार तो पर कैपिटा इनकम बढ़िबो पर कैपिटा इनकम में जदि एडिशनल इनकम हमें जनरेट करि परछु वेस्ट टा जोटा होची ताको जदि हमें इफ वी आर एबल टू अरेस्ट द वेस्ट इठी हम सामने रे वर्तमान ए गोटे स्लाइड अछि जोठी को जाउची 40% होची जो फूड ग्रेन लॉस होची ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ हमें ए 40% लॉस जदि हमें ताको सेव करि दबा with a small deviation from here very recently हमरो वर्ल्ड बैंक डाटा कहूची इंडियन डाटा ताको सपोर्ट करिछि जे वर्ल्ड इंडिया रे हमरो जो बिलो पॉवर्टी लाइन 34% रु कम की वर्तमान 17% पाका पाकी आसीछि बोली इफ आई एम रॉन्ग आई मीन फैक्ट इज सेड बट ओनली द फिगर टेके आगे पछई पारे किंतु हमरो बिलो पॉवर्टी लाइन लोक कमी चंती एटा इंडिया रे हेछि तो सेही हिसाब रे हमें जति इनकम बढ़ाई परिबा ए जो किछि अछि मॉडल एठी दिया जाय छै और बहुत डक अछि एग्जांपल म तको देई नाही तेनो हमें करि परिबा तार दीटा का आपण कहिसंती दीटा को भी कहिसंती हंगर केमति कमुची आपण पॉवर्टी केमति कमुची तो इक्वालिटी आसीबो आसीबो म कहि छी यदि हंगर कमिला ये कमिला त इक्वालिटी बढ़िया आसीबो कहि छी ना आगोटे तो क्षेत्र म ऐड करबी सर हमर जो मोबिलिटी अछि जो ट्रांसपोर्ट हमें करूछु सम ऑफ अस प्रोबेबली वी फील वी आर एबल टू अफोर्ड हमें गोटे कार रे निज मो ड्राइव कली चलली किंतु पुल व्हीकल जोटा आसुची पब्लिक व्हीकल सेतरे पुल व्हीकल से पई भी आसी गलनी आपण अलगा टाउन गले सेठी अछंती आपण गाड़ी निजे गोटे चलेबे सेटू ड्राइव करके जाउचंती हायर द व्हीकल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग इट ऑल थ्रू लाइक भुवनेश्वर से यदि कांसेप्ट आसी थांदा तले प्रोबेबली मु संबलपुर गाड़ी धर के भुवनेश्वर आसी नथांती सो दोस थिंग्स आर हैपनिंग slowly obviously happening आउ कार अछि क्वेश्चन पचारंतु जति सार अछंती और अछि सोहन चंद्र सिंह सर नमस्कार मैं सोहन मिश्र नमस्कार सर सर ऑडिबल होछि हेलो सुबनी वॉइस टिके इको हल्ला मु बुझ परलिनी
अब सही अब सुबह आता ठीक से चार्ट बॉक्स लिखि न बुझा पड़लानी किछि। एक सेकंड 1 मिनट सर माय ऑडिबल हां एबे कोंतु हाँ सर मोर गोटे क्वेश्चन होची माने सपोज भाबंतु कि वार होची माने एबे सपोज भाबंती कि माने ऑपरेशन सिंदूर हेतला आ एबे फिलहाल रिसेंटली चली छी हमरो कोन की हम माने ई कोन की ईरान वर्सेस इजराइल ऊपर ईरान इजराइल सर हाँ यस सर बेले Amazing. इकोनॉमिक क्राइसिस तो सर बहुत होची माने मार्केटिंग डाउन रहउची एटा होची तो सर देन आफ्टर दैट माने वार हला पुरे तो माने इकोनॉमी टा डाउन रहिबो ता पुरे सर ताको कंट्रोल करिवा पई माने केमती आमे कोन किछि स्टेप नै परिबा काहे कि ना हमकु तो सर आपण गोटे स्लाइड रे कहले कि फ्यूचर जनरेशन पई हमकु इकोनॉमी को टिया कि रखिया को पड़िबो बट सर जदी एई सब जिंस हला बेला आमे केमती ताकू टिके किछि करि परिबा किछि इनिशिएटिव केमती नै परिबा मो इठी दीटा जिनस कहबी गोटे Okay, sir. गोटे आमे इंडिविजुअली कोन करि परिबा गोटे नेक्स्ट असला मे बी आमे आमो फैमिली कोन करि परिबो कलेक्टिवली देन आमो सोसाइटी आमे जो पेरिफेरियल रहउचु आमो गां बा आमो सिटी आमो टाउन एंड फ्रॉम स्टेट देन टू नेशन देन टू कलेक्टिव नेशन जोटा हमें जो रीजन सब यू नो जेमते ब्रिक्स कंट्री कहउचु सो रीजन्स भी अछि कि Yes, sir. यूरोपियन यूनियन अछि सो रीजन्स अछि तापरे होल वर्ल्ड हमें Yes. इटा तो बिगर मा अच्छा मो हमें इंडिविजुअल केस रे आसीबो धरंतु मो खाइला बेल को फूड वेस्ट करिबेनी सो देयर विल बी प्रिजर्वेशन आई प्रॉमिस माय सेल्फ दैट आई विल एंश्योर कि मोर खाइबारे गोटे ग्रेन भी रहिबो नाही दैट इज माय मो गोटे एग्जांपल देबी आउ किछि रहि जाइछि आमे आगो को बढ़ी पारलु धरंतु टेक्सटाइल मो आपण को माने एगुडा तो स्ट्रेट आंसर तो सटनली नहीं आई हैव टू ड्रॉ फ्रॉम सम केसेस टेक्सटाइल कथा टेक्सटाइल रे हमें जो अपैरेल्स हमें जो शर्ट बा जो ड्रेस पिंदुछु आई एम श्योर Yes. आपण माने यंगर जनरेशन जो माने अछंती यू हैव मींस किंतु मोर ठाउर आहुरी सीनियर सर अछंती विजय सर अछंती आउ भी केथिबे हम देखि पारु नै हमु चाइल्डहुड बेले मु ऑनेस्टली को I don't know I may not be quoted I must confess that मु गोटिए पेयर शर्ट पैंट को गोटे वीक चलोथली आज्ञा ओके आज तो मो पाखरे 40 पेयर शर्ट पैंट अछि या am I using that नो नहीं। सर इन सम रुचि। केस नहीं अच्छा। समय लानी किंतु मु से क्वेश्चन करबी ये 40 50 60 तयारी करबा को जो लोक एंगेज हिचंती ताकर सान किछ काम भी पाइले नहीं सर सेटा पाइले आपण किंतु सर्कुलर कॉन्सेप्ट इकोनॉमी रे सेटा आसुनी काहे कि ना रियूज ही पाउनी सोडा रही जाउची किंतु सर सही कथा एबे यूज आसिला करनते कोन करनते ताला आछन हमर समय ही जाउची आठ से हम सारिया कथा तेन करी जदि आ कार क्वेश्चन नाही हमें कंक्लूड करबा आ सार आज बहुत बहुत हमको पढ़े देले पाठ पढ़े देले जो मानकर इंटरेस्ट नथिले भी आराम रे सुनिले 40 मिनिट्स रो पाठटे इकोनॉमिक्स पाठ हमको पढ़े देले के जानि नांती होते से तांको काम आराम रे करते नहीं बर्तमान आमे भी काबा हवा जे इकोनॉमिक्स भी वर्तमान इंटरेस्ट नलानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं की बर्तमान लोक मान साधारण हेल्थ नहीं की आगुर आमे भाबुतले कोन जापान थ्रो कर दला जिंस कर फपड़ आ ता इकोनॉमिक्स ग्रोथ बहुत बढ़ी गला किंतु बर्तमान ताको सर्कुलर करिकि ताको आउरी केमती बढ़ा हबो ता पई एकमत जिंस मो हिसाब रे एकमत जिंस अवेयरनेस सबुतिर ना अवेयरनेस बिना अवेयरनेस रे जेमती थरे ये भी कहिथिले हमर अमर्त्य सेन कहिथिले जे हमर जो ओडिसा रे जो हेतिला दुर्भिक्ष सेते बेल को नंग दुर्भिक्ष जदि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हेई थांता तारे हे न थांता जेंते आपण कहिले जेति कि हमर खाना भुकला रहउछ ताटो बेसी खाना नष्ट होउची अलगा इरे काई कि कोना बिकॉज़ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होउनी तन एई जो एगुडा प्रॉपर अवेयरनेस ले सबुडा हमर ठीक हेई जिवो एबे आपनकर आ गोटे बोधे नोबेल लॉरेट ए फील्ड रे ए आपनकर सर्कुलर इकोनॉमी रे नोबेल लॉरेट सम ऑमस्ट्रॉन बोधे से किछि काम करते रिसर्च ऊपर मध्ये से किछि कहिसंती जे बर्तमान एटा माने इकोनॉमिक्स आ मैनेजमेंट मैनेजर माने इकोनॉमिक्स को बर्तमान मैनेज करचंती थ्रू एनवायरनमेंट अदर थिंग्स टू हैव ए गुड लाइफ हमको बहुत बहुत धन्यवाद हमको आज एते समय ए सब विषय रे पढेइले हमें जानिलु बहुत नवा जिंस जतियो एवडा करबा कथा कि सर आउथरे जेतु कहिसंती तेनको निहाती हम सब एवडा पालन करिया कथा मु भाबुची जेति हमर अछंती ए माने एटा पुनी प्रोपागेट करिवे निज पाखे न रखि कि लेट देम अगेन प्रोपागेट इट टू अदर्स आउ टिके जानंतु समस्त जानंतु तेन करी मोर
बहुत धन्यवाद सार को आमे पुणी आशा करू पुणी Thank you so जेते much. बहुत कष्ट रे आपन को पाइलु पुणी आउ थरे पाइबो बोली भाबुछु Sir, anytime. हां हां Anytime, sir. Anytime. Maybe with a new topic. ओके तेणु सार को धन्यवाद एवं आज जे संगीत सकाळ प्रारंभिक संगीत जे करे तांको धन्यवाद वैकुंठ बाबू आपन को मते धन्यवाद सुप्र मैडम को धन्यवाद एवं धन्यवाद जे देवे बर्तन तांको मते धन्यवाद तेणु मु रहिली वैकुंठ बाबू कंटिन्यू आपन कंटिन्यू करंतु धन्यवाद सर एबे धन्यवाद अर्पण करबा पय मु डॉक्टर उमाचरण पति महाशय को अनुरोध करछि सर समस्त को नमस्कार नमस्कार सर प्रोफेसर विजय मिश्रा सर हमर जे आज सभापतित्व करुछंती किंबा हमर संबलपुर शाखा जो विवेकानंद लोक संसद रो सर मुख्य एठी तांकर तत्वावधान रे हम सब काम करू हमर मुख्य वक्ता तथा मुख्य अतिथि आज दास महापात्र सर मु बहुत माने आगरू एकेडमिकली भी साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी फेरी तांकर एक्यूमेंट तांकर डिसीजन मेकिंग वेरी स्ट्रांग तांको पाई कि हम समस्त गर्वित आज बाकी समस्त जो माने जॉइन करिसंती मु तो इकोनॉमिक्स रो को मु जानि छी ए टॉपिक विषय रे